Good afternoon, students. Welcome back to today's class. We are continuing with the chapter 6 in triangles, exercise 6.4. In previous class, I explained first 3 questions of the exercise 6.4. Now we are going to continue with question number 4. The question is given like this. If the areas of two similar triangles are equal, listen carefully. If the areas of two similar triangles, what are those triangles? They are similar already. It's given. They are similar and their areas are also equal. These two are similar. For example, I have taken ABC and PQR and they are similar. That's given. What is given here? Triangle ABC is similar to triangle PQR. This is given. And what else is given? Their areas are also equal. So we can write it as area of ABC is equal to area of PQR. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? If we bring it to left side, area of ABC, if we bring it to left side, it becomes area of PQR. It comes to the denominator, and just a minute. Yes, area of ABC by area of PQR is equal to 1. If you send it back to right side, it will get multiplied with 1 and it will be equal. So this is the given data. Let this be equation 1. Now what we are asked to prove? Prove that they are congruent. Similar triangles को congruent proof करना है. किस basis पे? उनका area equal है और ये दोनों similar है करके. So let us consider these two triangles, triangle ABC and PQR. As they are similar, so what we can write here? Since they are similar, since the triangles are similar, they are similar, so their corresponding sides. What about their corresponding sides? Corresponding sides ratios square will be equal to the ratio of their areas. So their corresponding sides ratio, then their square of corresponding sides ratio. We can write it like this: area of triangle ABC by area of triangle PQR. What is the statement we learned in the theorem? AB by PQ whole square. It's not just ratio, it's square. Then BC by QR whole square is equal to CA by RP whole square. Okay, so this is the statement we get. But from equation 1, what we can write from equation 1? Their ratio is equal to 1. Areas of, because they are equal to 1 also. Ratio, that means दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही बचेगा. So in place of this we can write 1. So this is equal to 1 and that 1 is also equal to all these values. So we'll take it like this: area of ABC by area of PQR is equal to AB by PQ whole square, and this is equal to 1. So AB by PQ whole square. From this we can write it as AB square by PQ square. Again we can write here it as PQ comes this side, PQ square is equal to AB square. Square on both sides cancel. Then it is PQ is equal to AB. Okay, this is what we get from this statement. But AB by PQ square is equal to BC by QR whole square, and which is also equal to CA by RP whole square. That means if you continue this procedure again, you will get similarly BC is equal to QR and
CA is equal to RP. Okay, so now soon after you see these three boxes, you need to recollect the things that we learned in the previous class. What is that? If three sides of the two triangles are equal, then they are congruent on the basis of triple criterion. Therefore, according to triple criterion, triangle ABC is congruent to triangle PQR. That's it. What we have done here, we have written the given statements. They both are equal in area because they are, that is given statement, and they are similar also. So if they are similar, this is the statement we get. ये दोनों इक्वल होने के कारण उनका रेशो 1 होगा, वो दोनों सिमिलर होने के कारण ये स्टेटमेंट हमने लिखा है, और इक्वल एरिया में जो वैल्यू अपन ने लिया 1 उसको यहाँ पर रिप्लेस किया, एंड we have shown that all these three sides are equal. So if they are equal by triple criterion, they are congruent also. That's question number 4, children. I hope you understood it. Question number 5. D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. That means D is midpoint of AB. Let us say this is midpoint of AB, D, and E is the midpoint of BC, E, and F is the midpoint of CA. So let us say this is midpoint here, F. Triangle ABC. So find the ratio of the area of triangle DEF to and ABC. DEF, यानी कि you need to join these points DE and F. ये ट्राइंगल बनने के लिए तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होगा. These three points are joined. Now find the ratio of, ratio फाइंड करना है, find ratio of area of, ratio of the area of DEF and ABC. Look at this figure. ABC is the bigger triangle, DEF is the smaller triangle. That means the triangle that is formed by joining the midpoints of three sides, उस ट्राइंगल का एरिया ABC ट्राइंगल एरिया में कितना होगा, ये हमें सिंपली बताना है. ABC इज द बिगर ट्राइंगल, DEF इज द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल. सो आंसर जो होगा इट विल बी 1/4 बिकॉज 1 2 3 4 ट्राइंगल्स आर देयर. ये सभी ट्राइंगल्स इक्वल होंगे. ऑल दीज ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, सिमिलर. सो ये आंसर 1/4 होगा. 1/4 आंसर जो आएगा 1/4 आएगा. बट वी नीड टू प्रूव इट हाउ it will be, or we need to find out even 1/4 भी कैसे आएगा करके हमें प्रूफ करना है. See this figure. Midpoint theorem हमने जो क्लास 9th में पढ़ा था, that thing you need to recollect. Take the side BC in triangle ABC. For side BC, D and F are the midpoints. That means for side BC, a line segment which passes through the two midpoints of two sides will definitely be parallel to the थर्ड साइड. ये स्टेटमेंट हमने क्लास 9th में पढ़ा था, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 9 में. सो लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय टू मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स विल डेफिनेटली बी पैरेलल टू थर्ड साइड. नॉट ओनली दैट, DF विल बी हाफ ऑफ BC. जिस साइड के पैरेलल में ये होगा उस साइड में ये आधा होगा. सो DF विल बी हाफ ऑफ BC. ओके, दैट मीन्स DF and BC are parallel. ABC is triangle and then DEF is another triangle. इन दोनों ट्राइंगल्स में ये पैरेलल होने पर ये एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हियर. सो टू एंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स, इफ यू टेक DFA ट्राइंगल एंड ABC ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल में DFA ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स आर equal. So like that we will be proving that all the other triangles are also
similar to one another. Therefore, we get the answer. Let us consider triangle BED and BCA, this bigger triangle. We can take DEF and ABC also. We are starting from here, BED and BCA. In these two triangles, DE is parallel to AC according to midpoint theorem. According to midpoint theorem, what do we have? DE is parallel to AC, that much only now, and DE is half of AC. AC में DE value जो है आधा होगा. Okay, now in these two triangles we have angle B is common for BED and BCA. दोनों triangles के लिए angle B common है, so we can write it as angle B is common in both the triangles. So angle B को कैसे लिखेंगे अपन? EBD, angle EBD is equal to CBA. CBA, common angle, and then angle BDE is equal to BAC. Why they are equal? They are corresponding angles. Then BED is equal to angle BCA. Sorry, it gone here. BCA. They are also corresponding angles. Okay, so therefore by AAA criterion, what we can say? Triangle BED is similar to triangle BCA. So if they are similar, what is the statement we can write? Area of BED by area of BCA will be equal to square of ratio of their sides. So what are the corresponding sides? BED and BCA के लिए we can write it as DE and AC are corresponding sides. So DE by AC whole square अपन लिख सकते हैं, but these are the corresponding sides. You can also write is equal to BD by AB, but not required. DE and AC का relationship दिया हुआ है क्वेश्चन में. What is that relationship given? DE is equal to half AC. So here you can write in place of DE, you can write it as 1 by 2 AC by AC. So in both AC cancel, we are left with 1 by 2 whole square, which is equal to 1 by 4. So area of BED by area of BCA is equal to 1 by 4. So remember this one. This is equation 1. Okay. In other words, you can write it as area of BED is equal to send this to other side. It is 1 by 4th into area of BCA. That means BED का जो area है, BED means the smaller triangle, the part of the triangle. BED का जो area है, BCA area total full triangle area में 1/4 होगा. BED area is equal to 1/4 of BCA, right? And similarly we'll prove. Similarly, when you follow the same procedure, you will get, you can write it also similarly area of triangle EFD will be equal to area of CAB, 1 by 4th area of CAB
बी एंड एरिया ऑफ ई एफ डी हो गया. देन एफ डी ई, सॉरी एरिया ऑफ ई एफ डी नहीं, एरिया ऑफ, जिसे अपन ने बी ई डी लिया था, उसके बाद एरिया ऑफ सी एफ ई, दिस इज सी एफ ई, एरिया ऑफ सी एफ ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ सी एफ ई सी ए बी. देन नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ ए डी एफ, एरिया ऑफ ए डी एफ, smaller triangle is equal to 1/4 area of ABC. 1/4 ABC. You write ABC, CAB और BAC, मीनिंग तो वही है ना. ABC लिखो, BCA लिखो, CAB लिखो, ट्राइंगल तो वही है और उसका एरिया भी उतना ही रहेगा. सो इट मेक्स नो चेंज, राइट. नाउ सो वी कैन राइट हियर, वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ DEF. सो DEF is equal to area of D is equal to 1 by area of DEF कैसे आएगा? टोटल में से तीनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. टोटल फुल ट्राइंगल में से 3 पार्ट्स को माइनस करेंगे तो बचेगा जो 3 को माइनस किया टोटल में से, तो ये बच जाएगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ, तीनों के एरियाज माइनस करेंगे. व्हाट आर दोस? BED प्लस CFE प्लस ADF, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया माइनस करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC. डू वी हैव एरिया ऑफ ABC? yes, we have here. Otherwise let it be area of ABC only, ABC minus area of what about this area of 1 by BED? BED का एरिया कितना आया? 1/4. so you can write here 1/4 ABC और BCA 1/4 BCA, and then plus CFE का कितना आया? 1/4 CAB प्लस ADF का 1/4 ABC. okay, next area of ABC is the full triangle minus, अब देखो 1/4 1/4 1/4 and यहाँ पर BCA CAB ABC, all three are same. BCA CAB ABC 3 triangles same ही है. so we can write it as common 4 is the common denominator. 1 plus 1 plus 1 3 ABC, तीनों को मैं ABC से रिप्लेस कर देता हूँ. so this is equal to area of 3 ABC, or simply you can write it as area of ABC minus 3/4 area of ABC. what is this? which is equal to area of DEF. now see, LCM is 4 here, denominator 1 here, 1/4 4 times, so 4 into it is area of ABC minus 3 into area of ABC. so it is equal to 4 minus 3, 4 ABC minus 3 ABC is 1 ABC. so 1 area of ABC by 4, which we can also write it as 1/4 into area of ABC. अब इस ABC को अपन क्या करेंगे? विल सेंड इट टू द अदर साइड. यहाँ पे DEF है ना, एरिया ऑफ DEF है, तो ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड से इधर लेके आते हैं. एरिया ऑफ DEF होल बाई एरिया ऑफ ABC, which is equal to 1/4 is left. so what is the ratio? क्वेश्चन जो पूछा था अपन से, हमें जो क्वेश्चन पूछा उसमें एरिया फाइंड, रेशियो फाइंड करना था. एरिया ऑफ DEF by ABC, that is equal to 1/4. so what we have done in this question? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? पहले ए ट्राइंगल को लिया, स्मॉल ट्राइंगल,
और बिगर ट्राइंगल, इसमें BED BCA को लेके सिमिलैरिटी प्रूफ किया, DE और AC का इक्वल पैरेलल है, सो ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, सेम हियर एंड दिस इज कॉमन, सो BED इज सिमिलर टू BCA, ये दोनों सिमिलर होने पर करस्पॉन्डिंग साइड्स DE एंड AC उनका रेशियो का स्क्वायर दोनों ट्राइंगल्स के एरिया से इक्वल होगा, वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, उसमें से अब हमें 1/4 मिला था, सो सेम टू सेम उसमें से BC को अदर साइड भेज दिया, BCA CAB ACB एरिया के मामले में तीनों इक्वल होंगे, आपके चाहे कैसे भी लिखो, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ एरिया यू कैन राइट चेंज द ऑर्डर बट द वैल्यू विल बी सेम, एरिया विल बी सेम। ट्राइंगल को आप कैसे भी घुमाओ उतना ही जगह रहेगा ट्राइंगल का। सिमिलरली फॉर द रिमाइनिंग 2 ट्राइंगल्स ऑल्सो, रिमाइनिंग 2 ट्राइंगल्स का भी वैसे ही आएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो टोटल में से 3 जिनके हमने निकाले हैं ऑलरेडी एरियाज उनको माइनस करेंगे तो जो चाहिए वो आ जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर, सबट्रैक्ट किया, वो तीनों का समेशन 3/4 एरिया 3/4 ऑफ ABC आ गया, उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो 1/4 आता है, सो 1/4 इज द अल्टीमेट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट वाज दिस, क्वेश्चन नंबर 5। So that's it children, I will be uploading 2 more questions, question number 6 and 7, then with this exercise will be over. I hope you understood it. If you didn't understand it, watch it again. Every time I say the same because mathematics is something we need to clearly focus. Once the logic is understood, everything is understood. So I hope update these answers in your notebook. We'll meet with the next 2 questions in the next video. Till then, goodbye.